Hi everyone, welcome back to the math tutor. In our today's video, we'll learn about subset and superset. So if you enjoy the video, make sure to subscribe to this channel, and if not, comment why. Okay, so let's start the topic. So what is subset and superset? In our previous video, we learned about set. Okay, set, their representation and different type of set. So if you not watch that video, you can watch from our playlist. Okay. So what is subset? Subset means नाम से पता चल रहा है कि एक छोटा सेट है. ओके, सब मीन्स छोटा. ओके, सुपर मीन बड़ा. सपोज ए सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी सेट. ओके, हम ए सेट को बी का सबसेट कहेंगे. कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट सब एलिमेंट ऑल्सो एन एलिमेंट बी में होंगे तो. ओके, अगर ए का एवरी एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा तो हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और उसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे. व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी. अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी में होगा तो हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड वी कैन सिंबलाइज दिस as this. Okay, so the set q is rational number is a subset of the set of real number, because real number सबसे बड़ा सेट. ओके, इसमें रेशनल आते हैं, इरेशनल आते हैं, नेचुरल आते हैं, इंटीजर आते हैं. तो सबसे छोटा सेट क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है. नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट जो होता है. और जेड में क्या होता है? इंटीजर में क्या होता है? जीरो भी इंक्लूड होता है. जीरो पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ये सब होता है. उसके बाद क्या आता है? रेशनल नंबर आता है. रेशनल नंबर में जेड भी इंक्लूड होता है, एन भी इंक्लूड होता है, और दोस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, हर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो क्यू भी होता है. तो सबसे छोटा सेट एक्चुअली होता है इंटीजर. इंटीजर किसका सबसेट होता है? सॉरी, सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर. ये किसका सबसेट होता है? इंटीजर का. इंटीजर किसका सबसेट होता है? रेशनल का. एंड रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है? रियल नंबर. Similarly, if I say the set of all divisor of 56, if A is the set of all divisor of 56, okay, so what are the element of A will be 1, 2 also divide, 3 no, and 4 will divide, and 7, then 14, then 28, then 56. These are the divisor of 56. So, and B is the set of all prime divisor. B is the set of all prime divisor. Those divisor which are prime. So here prime number is 2, 7. Okay, only 2 and 7. So here we see every element of B is also an element of A. So I can say B is a subset of A. Okay. Now I have another example that let A has element 1, 3 and 5, and B is written in set beta form, which contain odd natural number less than 6. So less than 6 odd natural number कौन टू है? 1 है, less than 6, और odd है 3 है and 5 है. So these two sets are contain both the same element. Okay, so here every element of A is a element of B, so I can write A is a subset of B, and also every element of B is also a subset element of A. B का भी सब element A में है, तो I also write B is a subset of A, and hence write A equals to B. So this is the condition of equality of set, that if A is subset of B and B is subset of A, then we say both sets are equal. So this is the condition of equality. This is an important condition. Now in the last one, here we see A contain AEIOU and B contain ABCD. Here every element of A is the element of B. Okay, but
not every element of A are in B, and also not every element of B are in A. So you cannot say. So here A is not a subset of B, or B is also not a subset of A. And when you say A is a subset of B, that equally mean B is a superset of A. When A subset of B can also be said as B is also a subset of B is a superset of A. A subset of B means B is a superset of A. So A is the subset and B is the superset. So this is all about set, subset and superset of a set. So if you enjoy the video or like this video, subscribe to this channel, and if you not, comment why you not like this video. Okay, thank you.